this special conversation with Dr. Gouri Gupta on the subject reproductive health of women as an area of concern, especially for Indian athletes, because if we see around, is there knowledge, is there awareness, do people really know, especially athletes from relatively rural areas, talented athletes who really need such kind of knowledge and information? Dr. Gupta, thank you very much for your time. If I can dive straight into the question, reproductive health of women as a neglected area from the perspective of sport. A lot of women athletes ask themselves this question and eventually drop out. I know many who have dropped out because they have had to choose between one. Your thoughts on that, and how should athletes approach it? Okay. Thank you, first of all, for calling me to this show. Yeah, it means a lot. And the topic that you have chosen is really nice. I mean, it is the need of the hour, reproductive health in athletes. Yes. And most of them have to leave their career, their chosen profession because of this, because they feel that they have to choose one amongst them. So this is one thing which needs to be really thought about, and what we as professionals can do about it, and what knowledge can we give to them. That's very important. So what I would see, being a fertility specialist, an IVF and a fertility specialist, the main important thing which I see here in women who want to choose a career in sports is a dilemma whether to be a mother or whether to pursue sports as such, because they always feel this is the time period which I can give in 100% to my sports, or this is the time period which I need to dedicate to my start a family, because after that my reproductive the age, the clock will drop down, and after that I cannot really pursue it. So this is what most of the people don't know. But what we have is a very beautiful thing which can help most of the women freeze their biological clock as far as the reproductive the clock is concerned. Something known as oocyte cryopreservation, or egg freezing in very simple terms. Okay, so what athletes can try and go forward to is they can stimulate, they can go to a fertility specialist, they can freeze their oocytes or the eggs, and then after that, after their career in athletics, they can come back anytime. They can come back in their 40s, late 30s, and they can have their own biological child. How long can you freeze your eggs for? I mean, how long can you do this for? I mean, how long can you come back later? Eggs can be frozen for eternity if you talk about science. But if you talk about legalities, it can be frozen for 10 years as per Indian laws. Okay, so someone who is in her late 20s, Manliji, can come back late 30s on the cusp of retirement or after retirement or something like that, and then absolutely sort of continue in that manner. Okay. Yes. Several questions. People who are much more younger, like 16, 17, and who want to freeze their eggs before, maybe I'm not talking about athletics now, maybe chemotherapy or some cancer or something, they can be given a longer period also. So there is no upper limit as such for freezing the eggs. They can be done for a longer period also, because science does not limit it at all. Thank you very much. Thank you so much. Yes. ये जो मेंटल हेल्थ और ये बबल लाइफ लेके हम लोग इतना बात करते रहते हैं, आपने कैसे डील किया इसको? घर नहीं जा सकते, किसी से नहीं मिल सकते, एक रूम में रहिए, बबल में रहिए, खाली टीम से मिलिए. Clearly you have that little world to live in. Even in Tokyo you cannot meet anyone. So how have you dealt with this entire COVID period? It's really difficult to be honest. ये bio bubble, quarantine, ये सब इसमें ट्रेनिंग करना इतना easy नहीं है. स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. इवन फिजिकली तो आप सफर कर ही रहे हो, बिकॉज जो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, वो आप रूम में तो रह के नहीं कर सकते. एंड समटाइम्स आप इतना मतलब हाई ट्रेनिंग करके, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करके आपको लगता है कि ठीक है आप रिकवरी के लिए जा रहे हो, पूल्स जा रहे हो या टीम्स होना जा रहे हो, उसमें भी इतना वो है कि आप ज्यादा लोगों के साथ नहीं जा सकते. देन यू हैव टू वेट कि अगर दूसरा आएगा फिर हम जाएंगे.
इतना इजी नहीं है, स्पेशली जब आप कहीं से जा रहे हो, वहां जाके आपको 7 या 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करना है, रूम में ही रहना है, रूम में फूड, आप 24 आवर्स मतलब रूम में ही हो। आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कि मुझे पॉजिटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, लेकिन जब आप रूम में रहते हो वो एक नेगेटिविटी फिर भी आता ही है, और उस नेगेटिविटी से आपको कैसे दूर रहना, इट्स रियली चैलेंजिंग सभी एथलीट्स के लिए ना, क्योंकि आप फैमिली से दूर रहते हो एंड अपने रूम में रह रहे हो, स्पेशली जब आप टीम में हो। नॉर्मली आप एक टीम एनवायरनमेंट रहते हो, आप ग्राउंड में जाते हो, अपने टीममेट्स के साथ फन करते हो एंड बात करते हो, बट वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता। बट या कोविड ने ये सब चीजें करनी सिखा दी। डील हम ऐसे करते हैं कि जैसे बायो बबल में थे 5-6 मंथ के लिए, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ, तो यही था कि जो हमें रूम में थोड़ा बहुत काम दिया जाता था फिटनेस के लिए वो करते थे, एंड जूम कॉल्स कर ली कभी टीम ने। देन कोचेस भी यही करते थे कि हमें जूम कॉल्स करके कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे मेंटली इमोशनली, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो बात करने के लिए। एंड अगर किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो हमेशा शेयर कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमारी फैमिली में कुछ होता है, हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बट वो एक फ्रीडम थी कोचेस की तरफ से भी ना। एंड साई ने एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की कि एक सेफ एनवायरनमेंट में थे, बायो बबल बना के कि कोई अंदर ना आए, हम जाने, अच्छा हेल्दी खाना देना 3 टाइम पे। हॉकी इंडिया ने अच्छी टेक केयर की उस टाइम पे। डिफिकल्ट है, बट ये है कि कोविड ने सिखा दिया अभी ना कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना ना, कि आप ज्यादा लंबा ना सोच के कि ठीक है जो दिन आपके सामने है उसके बारे में सोचो कि आज मुझे कैसे ये दिन अपना एक स्केड्यूल करना है और कैसे इस दिन में मैं एनर्जेटिक रह सकती हूँ, पॉजिटिव रह सकती हूँ। बट डिफिकल्ट बहुत है, लेकिन हो जाता है मैनेज।